today's topic, that is role of management information system in the business organization. जनरली क्वेश्चन आता है किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, स्पेसिफिकली इफ यू आर स्टडिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट, कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो उसका एक्चुअल में रोल क्या है, कैसे वो किस लेवल पर किस पर्टिकुलर पर्सन को हेल्प करेगा इन टेकिंग द डिसीजंस और इन द बेसिक ऑपरेशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. So, I am here today with this topic, role of management information system, that is MIS in the business organization. Before I start, I request कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और इफ द वीडियोस आर वर्थ फॉर यू, क्या ये आपको हेल्प कर रही है एग्जामिनेशन में, सो दैट हम भी इसे इम्प्रूव करें एंड वी बोथ, आप और मैं, हम सब म्यूचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़े. Now we are proceeding to role of MIS in the business organization. कंपनी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग यूनिट्स काम करते हैं MIS के. MIS must be integrated at all levels of the company to facilitate the management in decision making. लास्ट में मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट्स मिलती हैं, they are integrated reports. MIS is used by the top management, that is by the managers only. The top management of the company must play an active role in designing, modifying and maintaining the management information systems which is used at all the different levels in the organization. This is a very important point to be noted. एक organization का जो top management है, उसको बहुत actively इंटरेस्ट लेना होगा, रोल प्ले करना होगा, ताकि एक MIS जो डिजाइन हो वो कंपनी की सारी नीड्स को माइंड में रखकर हो. सारे डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल डिजाइनिंग एनी MIS फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, ताकि हम उसे कभी भी अगर मॉडिफाई करना चाहें या मेंटेन करें फ्यूचर में, तो इट शुड बी इन द नोटिफिकेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. Top management must have a knowledge of all this MIS system. This is very important क्योंकि top management is coordinating with all the lower department managers or the lower department heads. Information systems and information technology have become nowadays an important component of any successful business and are considered as the major functional areas as other functional areas of any business organizations like marketing, finance, production and HR. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, HR, MIS बहुत जरूरी उसका पार्ट बन चुका है, क्योंकि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही इम्प्लीमेंट करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो यू कैन नॉट कीप it apart from the organization. But it is essential to understand that MIS is important because all businesses generate new data on everyday basis and have a need of information without a fail and about the various tasks which are to be performed. ये बहुत जरूरी चीज है MIS, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर हमारा डेटा बहुत सारा जनरेट हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दैट डेटा और उस डेटा से करेक्ट इंफॉर्मेशन को, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए, so that they can take the good decisions, it is important to implement management information systems. Information and technology provides MIS. Now MIS is a fruit of information and technology, and it is a tool for solving problems and an aid in the decision making leads to increased productivity and quality work. MIS काम क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजर्स को, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और क्वालिटी इंक्रीज हो, क्वालिटी वर्क हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, which are very important goals of any organization, which leads to a good repute in the market for any organization.
So lastly, we'll sum up few of the points. That is, role of MIS in the business organization. Supports the business process. Yes, it treats inputs as a request from the customer and outputs as a services to the customer. Supports current operations and uses the system to influence further way of working. सबसे बड़ी चीज, कस्टमर जो भी इनपुट देता है उसको लेता है रिक्वेस्ट की फॉर्म में और उसे इनपुट की तरह ट्रीट करता है, और आउटपुट जनरेट्स जो होते हैं दे आर द सर्विसेज फॉर कस्टमर. वी मस्ट प्रोवाइड अ गुड सर्विस टू द कस्टमर. दिस इज द मोटो ऑफ एनी MIS. करंट ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है और सिस्टम को यूज करता है और पूरे के पूरे वे ऑफ वर्किंग को इन्फ्लुएंस कर देता है. पॉइंट इज support operation of a business organization. MIS supports operations of a business organization by taking timely information, maintenance and enhancement which provides flexibility in the operations of an organization. This is very important. अलग अलग ऑपरेशंस जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सो दैट मेंटेन किया जा सके और इन्हांस किया जा सके ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड पॉइंट, टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग. MIS supports the decision making by employee in the daily operations. MIS also supports managers in decision making to meet the goals and objectives of an organization. Different mathematical models and IT tools are used for the purpose evolving strategies. सबसे जरूरी चीज, MIS का मेजर क्रूशियल रोल है टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, और वो डिसीजंस अलग अलग लेवल के होते हैं. नंबर 1, डेली ऑपरेशंस में, उसमें भी MIS हेल्प करता है. सेकेंड, डिसीजंस टेकन बाय मैनेजर्स. क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के. एंड ऑल्सो इट गिव्स अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स और IT टूल्स. ये दोनों चीजें कोई भी MIS प्रोवाइड करता है ताकि हम नई स्ट्रैटेजीज बना सकें आज के कॉम्पिटिटिव एरा में कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए. स्ट्रैटेजीज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. Today, each business is running in a competitive market. MIS supports the organization to evolve appropriate strategies for the business to ascend in the competitive environment. सबसे important और milestone achieving point. हर business का, हर कंपनी का अल्टीमेट गोल है कि आज के कंपटीशन में, और ये कंपटीशन अब ग्लोबल लेवल पर है, इंटरनेशनल मार्केट का है, क्योंकि वी आर इनटू द डिजिटल एरा. तो इस डिजिटल एरा में, मोस्ट कॉम्पिटिटिव एरा में, हम अपने आप को सस्टेन कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकें और उसे एक रिप्यूट कंपनी साबित कर सकें. MIS सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को to evolve the appropriate strategies for leading in the market. So we have completed today this particular topic, role of MIS in the business organization. अगर आपके कोई भी questions हो, comment कीजिएगा. I will definitely revert you back. Anything else you want to learn, do comment me. Thank you so much. We are welcoming your questions, your ideas also to be implemented. Thank you. Have a very nice day and a wonderful life.